Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn about the future perfect tense. But this video के बारे future perfect tense बारे किस दको? पहले हो मुंगा रे use कम से किधे? वकम मोको बांधे हो मुंगा future perfect tense use को. So use a simple day activities which will be completed in future. हाँ कारुना come to future के completed we. मतलब वो इस्लानी दी complete शेवी हो यो set a time for future के पाग time पोरे बा the activity complete शेवी. For example, by 5 June I will have completed my English language course. 5 June चिका लगेगी आगे न मख के my English language course complete करेगी. For the past future is timeline now is that was any वक्त है the past है the future दे आओ बदे time के वमा completion भी हमारा completion time बदावी और 5 जून चिकल राजी नुमा बखल कोर्स कंप्लीट करी उर्दू के पहचान संगरे चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे चुके होगे और चुका होगा और so for first की जमासरा मेरा लो so we have to use I वो रालो और चुकी होगी हो so we have to use she ये मौसम टाइम से करो so we have to use it then चुके होंगे हो आओ पर शुरुआत के वो so we have to use they प्यार जमासरा हम हो so we have to use we तुम आप जिक्र रालो so चुके होंगे भी या मुंगो यूज को आप और वो जिक्र हो so we have to use he प्लस के चुका होगा helping verb so helping verbs जमासरा ये होती द्वदी will have और the total तरह will have use की the I, we, you, they, he, she, it singular noun, plural nouns. With all of them we have to use will have. Structure positive singular subject plus will plus have plus verb third form and rest of the sentence. For example, by 3 p.m. he will have solved all the fruits. चुकले 3 p.m. कीगी हगबा टोल फ्रूट्स खर्च करी हुई किदी चिपा ध्वनि में खर्च करी हुई ध्वनि में बजे बांधे या 2 बजे मार को चुका ले 3 बजे की किनु दबा टोल फ्रूट्स सेल करी हुई नेक्स्ट she will have played cricket by the time you come चितकला राजी हगबा क्रिकेट करी हुई साथ रात लो ना मख के बदाकार कंप्लीट शिवी हुई नेक्स्ट the negative structure subject plus will plus not plus have plus verb third form. For example, they will not have eaten the meal by 9 p.m. 9 p.m. कला राजी नो हावी बला मील नहीं खोलनी और interrogative structure will plus subject plus have plus third form and rest of the sentence. For example, will you have repaired my mobile by tomorrow क्या कल तक तुमने मेरा मोबाइल ठीक कर लिया होगा और या तुम मोबाइल ठीक कर चुके होंगे सारला पोरी सारला कल राजी था बमा दागे मोबाइल जमा मोबाइल पे दागे ना मख के ठीक करी भी के नहीं that's the negative structure. So we have learned about the future perfect tense to use is a activities which will be completed in the future. हागा activities चिकम बजमासरा पर future के complete शिवी दागे ना पारा मुंगो use को future perfect tense. For example, by 5 June I will have completed my English course. 5 June राज दागे ना मख के my English course complete करेगी. उर्दू पहचान चुका होगा चुकी होगी etc. Helping verbs हमारा सिर्फ द्वदी will have and the all of the pronouns and nouns सिर्फ मुगा will have use को positive structure संगरे subject plus will plus have plus verb third form and rest of the sentence. Negative structure subject plus will plus not plus have plus verb third form and rest of the sentence. And interrogative structure will मुझे संग पता रहे first helping verb बा फर्स्ट पोजीशन तराशी आओ दागी से बा सब्जेक्ट वाली
will plus subject plus have plus verb third form and rest of the sentence with a question mark. That's it for today. Inshallah, see ya in next video. Bye bye.